Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back to this channel. This is me Swati Jaiswal and here I am welcoming you to all. We are just going to study a first chapter of your English literature and the chapter name is Nails in the Fence. The whole chapter is based on the present tense and here lots of sound. The letter S, it means as in shape. Okay, so now here have a discussion in a class on the topic why we should not get angry. You all are at your home, so you just discussed why we should not get angry very often. I hope they will give you the solution or the reason why you wouldn't get angry, okay, and why you should. Here it is the chapter Nails in the Fence. The story is based on a boy who is in short-tempered problem. Okay, Manav is a young boy who is handsome, bright and talented. He is a leader everywhere, but he is extremely self-centered and has a very short temper. He says some really hurtful things whenever he is angry. His parents are very worried about his bad behavior and they think of what they should do. Finally, his father has an idea. आपको इस स्टोरी में ये पता चलेगा कि एक बच्चा जिसका नाम होता है मानव, ठीक है, वो एक लड़का है, उसका नाम है मानव. वो बहुत ही हैंडसम होता है, ब्राइट स्टूडेंट होता है और बहुत ही टैलेंटेड होता है और वो हर जगह हर किसी को लीड करता है. ही इज द लीडर, ओके, बट इन स्पाइट ऑफ दिस ही इज एन एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड और अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. वो उसको बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, हर छोटी छोटी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है. एंड ही सेज सम रियली हर्टफुल थिंग्स और वो इसी गुस्से के कारण वो हमेशा कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो दूसरों को बुरी लग जाए. उसके इस बिहेवियर की वजह से उसके पेरेंट्स क्या थे, उससे बहुत ही ज्यादा वरीड थे, टेंशन में थे कि उसके इस बैड बिहेवियर के चलते वो अपनी लाइफ में कैसे सरवाइव करेगा. सो दे थिंक ऑफ व्हाट दे शुड डू. इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए. एंड सडनली हिज फादर हैज एन आइडिया. तभी उसके फादर को एक आइडिया आता है. सो लेट्स सी नाउ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर. Okay. See, Manav's father calls him out in the garden one day. Son, you get angry at very small thing and speak hurtful words. The son replied, Father, you see, though I say these hurtful words, I always say sorry afterward. यानी उसके फादर जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि देखो बेटा, तुम क्या करते हो, यू गेट एंग्री एट वेरी स्मॉल थिंग्स. तुम्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, तुम हमेशा कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हो जो बहुत ही हर्टफुल होते हैं. तो तभी वो छोटा बच्चा जो होता है, ही रिप्लाइड, जब भी मैं ऐसा कुछ करता हूँ, आई ऑलवेज से सॉरी आफ्टरवर्ड. तो मैं हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ और सॉरी बोलता हूँ. सो नाउ हियर his mother and his father explained to him in many ways to give up his anger and become kind, okay, but all their attempts failed and finally his father thoughtful of an idea. क्योंकि उनके सारे अटेम्प्ट जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक आइडिया निकालना पड़ता है. okay, and what idea his father has in his mind. Father smiles and he takes out of a box of nails and a hammer. What are these for, father? He asked. His father replied, Manav, let us strike a bargain. Here are some nails and a bag and a big hammer for you. जब उसके फादर उसे
देखते हैं तो वो उसे देख करके स्माइल करते हैं. He just take out a box of nails and a hammer. तभी वो एक बॉक्स में नेल्स और एक हैमर लेकर के उसके पास आते हैं. So he just curious what they have in his hand. So he just want to ask, what are these for father? ये है किस लिए? Then his father replied, just strike a bargain here and some nails and a big hammer for you. मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ? एक नेल्स से भरा हुआ एक बॉक्स लेकर के आया हूँ और एक हैमर लेकर के आया हूँ. What you have to do it is just he replied, well son, from today onwards, whenever you lose your temper, I want to drive a nail with this hammer into the wooden fence of our house and hit the nails as hard as you can. Manav does exactly as he told. By the end of the day, Manav has driven 39 nails into the fence and he was really angry that day. So here, his father gave him a huge bag of nails and he asked his son to hammer one nail into the fence every time he became angry. यानी जब उसे गुस्सा आएगा तो उसे क्या करना है? उसे उस फेंस में एक नेल्स लगा देनी है. And every time when he became angry and lost his temper, यानी जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आए और एकदम बर्दाश्त के बाहर होने लगे. The boy found this very funny but agreed to do so. What his father had said. The boy found this very funny but agreed to do what his father had said, and every time he lost his temper, he ran to the fence and hammered a nail. On the first day, he drove 30 or 39 nails, as it mentioned here, into the fence. Okay. So in the next few days, the number of nails hammered reduced to half. यानी जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे क्या होने लगा था? वो रिड्यूस होते गए थे. यानी पहले उसे बहुत गुस्सा आता था, धीरे धीरे ही जस्ट कंट्रोल्ड हिज एंगर एंड ही जस्ट पुटिंग द few nails into the fence. Okay, so now here, gradually by the end of the week, the hammer of nails he driven into the fence became less. Father, see, today I did not drive any nail into the fence. And father smiles and said, I'm proud of you, my son. As a reward, you get to pull out one nail the day you don't lose your temper. यानी जब उसके फादर को वो बताता है, वो इतना खुश हो जाता है एंड तभी वो उसके फादर उसे क्या कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, यानी अब तुम धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख गए हो. सो नाउ यू हैव टू डू एज एन रिवॉर्ड व्हाट ही हैज टू डू, दैट ही जस्ट पुल्ड आउट अ वन नेल every day whenever he don't lose his temper. यानी जब कभी उसे गुस्सा नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? उस फेंस से जाकर के एक नेल्स निकाल देगा. As just the little boy found it very difficult to hammer the nails and decided to control his anger, so gradually the numbers of the nails hammered to the fence reduced. A day came when there was no nails hammered. And he told his father that he had been several days since he had hammered a nails into the fence. यानी वो अपने फादर को ये बताता है कि अब बहुत दिन हो गए हैं उसे, यानी उसने कई दिनों तक एक भी नेल्स उस फेंस में नहीं लगाया. So that meant that he hardly lost his temper. यानी अब वो अपने गुस्से पे काफी हद तक कंट्रोल कर ले रहा था. And now his father told him to gradually remove the nails every day. और तभी उसके फादर ये उसे कहते हैं कि अब उसे क्या करना है, उसे एक मतलब उस फेंस से वन बाय वन नेल्स को रिमूव करना है. So the boy was able to pull out almost all the nails and there's remained a few nails that he couldn't remove. यानी वो कई सारे नेल्स तो निकाल लेता है बट स्टिल उसमें few nails रह जाते हैं जो वो निकाल ही नहीं पाता है. So now here, in this manner, 2 weeks pass and gradually Manav does not lose his temper at all and every day he takes one nails off the fence. Manav feels proud
of himself, and he goes to his father and tells him about it. Son, I'm really happy about it. His father replied that, son, I am really happy about it. Let us go and inspect the fence. तभी वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम उस फेंस के पास चलेंगे और अब हम कुछ इंस्पेक्ट करेंगे, वहां पे कुछ देखेंगे, और वो उसे कुछ सजेस्ट करना चाहते थे. एक्चुअली द मॉरल ऑफ बिहाइंड दिस सिनेरियो. ओके, सो नाउ हियर when the boy just pulled out the nails into the fence, his father appreciated him and asked him, pointing to the holes left in the fence after removing the nails, what do you see there? The boy replied, holes in the fence. And the father explained, the nails were the bad temper you hammered on people, and you have removed the nails. But see the holes left by them in the fence, and you fence, your bad temper was like that. He just told to his son. See now here, Manav and his father inspect the fence. You have done very well, my son, but I want you to notice the holes on the fence. No matter what you do, and they will always remain. It does not matter how many times you say sorry, the scars is always here. So his father told him that कि आप जो भी words बोलते हो which is hurtful, है ना, जो भी ऐसे hurtful words आप किसी के भी सामने बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो लोगों के मन में scars उनके. So now here, people are very much more valuable than this fence, and they are our friends, and they support us in bad times. We must love and trust them. We need to treat them with respect. यानी वो उसे समझाते हैं कि तुमने किया तो बहुत अच्छा है, यानी तुमने नेल्स पहले लगाए, अपने बाद में अपने एंगर पे कंट्रोल भी किया, एंड आफ्टर दैट तुमने क्या किया, उन नेल्स को पुल्ड आउट भी किया, बट स्टिल यहाँ पे क्या रह गया है, यहाँ स्कार्स रह गया है, यहाँ पे होल्स रह गए हैं. सो ऐसे ही होते हैं जब हम अपने वर्ड्स किसी सेकंड पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ही हर्टफुल होते हैं. पीपल्स आर मच मोर वैल्यूएबल देन दिस फेंस. वो इस फेंस से भी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं जस्ट बिकॉज दे आर आवर फ्रेंड्स. वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एंड दे जस्ट सपोर्ट इन बैड टाइम्स, एंड वी मस्ट लव एंड ट्रस्ट देम. इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, एंड वी नीड टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट. So Manav understands what he has been doing, and he learned a lesson. The left scars on people's mind. They just left us scars. He just tried to understand about the concept behind the scene, whatever he did it. Okay. So now here, Father, I have learned a lesson today. And every day, and everyone get angry sometimes, but we should try to control our anger. Saying hurtful things and produces scars in the other person's heart. Scars produced by words are worse than the scars produced by a physical violence. He just understood the lesson what his father tried to understand about the angerness and the politeness. Okay, those nails that you could not remove are like the scars that will remain permanently on a person's mind. वो उन्हें ये बताते हैं कि तुमने जो नेल्स निकाले थे उसके बाद जो उसमें होल्स रह गए थे, वो क्या प्रेजेंट करते हैं, वो यही प्रेजेंट करते हैं कि जब तुम कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हो जो लोगों को हर्ट कर जाते हैं, तो वो क्या होता है, उन पीपल्स के माइंड पे भी अपने स्कार्स यानी वहां पर वो रह जाते हैं. वो चाहे तो उसको जितना भी भूलना चाहे, बट स्टिल दे कुडंट फॉरगेट इट. एंड we should try to control our anger. So the boy had now understood what his parents were trying to explain the boy, and this story is over. Okay, he just understand about
scars produced by the words are worse than the scars produced by the physical violence. यानी जब किसी को चोट लग जाती है ना, तो वो तो फिर भी भर जाती है, बट जो वर्ड्स हम कहते हैं वो कभी भी लोगों के माइंड से नहीं जाते हैं. So here the moral of the story is, let our words be kind and sweet so that our gesture is very kind. Okay. Now, thank you for watching this video. Hope you liked this.